Good morning, everyone. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I given you in the last video class. In last video class, we did questions based on finding the possible outcomes of different events, and today we are going to start with the probability, finding the probability of the event given to you. So, before that, we would be discussing how to find out the possible outcomes of different events like throwing two dice and question based on 52 cards, playing cards, and question based on tossing of coin. So let us start. So first, we will be discussing about when a dice is thrown. So you all know what is a dice. Dice is basically a cube that you generally use for playing what Ludo game. Uh, in that, the cube that is present in that the faces are marked with a number from 1, 2, 3, 4, 5, 6. The six faces are there in the cube, and every face has been marked with some number using dots. The After throwing the dice, the number that comes on the top of the face gives is the result. Okay, so when the two dice are thrown, we call that a die. ठीक है, जब हम more than two dice को हम throw करते तो we call them what die. So here are what two dice, so we call it in the throw of die. So when we throw two die together, so what are the possible outcomes? ठीक है, so we will see that. So when we throw two dice, so possible outcomes क्या क्या हो सकते हैं बेटा? If you see the first two dice, one is red one, another one is white. So if you see in the first row, 1 1, then 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Then on the second row, when on the red cube it is 2, and what our possibilities are there on the white cube? So 1, then 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. Now coming to the third row, in that when the 3 is there on the top of the red cube, so what all possibilities that are there in the white cube? So it is 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Same way, when on the fourth row, if you see, when the 4 is there on the top of the red cube, so what are possibilities, what possible number that can be there on the white cube? So it is 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. Now coming to the fifth row, when the 5 is there on the top of the red cube, so what are possibilities will be there in the white cube? It will be 5 1, then 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. ठीक है, when the 6 is there on the red cube, so what all possibilities is there on the white? So it is 6 1, 6 2, 6 3, then we have 6 4, 6 5, 6 6. So these are there. So if you count the total number of possible outcomes when we throw two dice together, so there are what 36. कितने बेटा आपके 36 क्या है possible outcomes हैं? तो if you make the table of it, अगर हम इसकी table form करते हैं, so this is a table you can obtain. This is first one is your 1 1. What does that 1 1 represents? On the top of the faces of two dice, on the first one it is 1, and the second one also it is 1. 1 to represent first one में 1 है, second वाले में क्या है 2 है. 1 3, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 3 है. 1 4. सेम वे अगर हम दूसरे की बात करें 3 4, व्हाट डज 3 4 रिप्रेजेंट? इट मीन्स दैट ऑन द फर्स्ट डाइस it is 3 on the top, and on the second it is 4. Same way, if we have a 5 3, what does this 5 3 means? 5 3 means 5 is there on the top of the first dice, and 3 is there on the top of the second dice. Similarly, if we have a 6 2, so what does the 6 2 means? 6 2 means what? 6 is there on your what first cube, and 2 is there on the second cube. Now questions are there in the based on this, that uh, what is the probability of getting a doublet? What is doublet? Doublet का मतलब क्या बेटा? Same number on the dice. दोनों dice में same number आना. जैसे 1 1 we call this a doublet. 2 2 this is also your doublet. 3 3 this is also your doublet. 4 4 this is also your doublet. 5 5 this is also your doublet. 6 6 this is also your doublet. तो doublet में क्या होगा बेटा? Same number आएंगे on the top of your what dice when the two dice is thrown together. So total outcomes is 36. Now coming to the next concept, that is tossing of coin. You all know there are two faces on a coin. This the face in which this is there, so we call it what tail, and in which the emblem is there, we call it what head.
So this is tail and this is head. And when we throw two coin together, so what are possibilities there? First, अगर हम single toss करेंगे तो हमारे पास या तो head आएगा बेटा, या तो क्या आएगा बेटा आपका tail आएगा. So two possibilities are there, head and tail. When we throw two coins together, तो what are possibilities there? क्या क्या आ सकता है बेटा आपका head आ सकता है, फिर क्या आ सकता है आपका head tail आ सकता है, और नेक्स्ट इज टेल हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है टेल टेल आ सकता है. ऐसे कितने बन गए आपके 4 बन गए. ठीक है. नाउ कमिंग टू द व्हेन द थ्री डाइसेस, थ्री कॉइन्स को अगर हम साथ में थ्रो करें तो क्या क्या बन सकता है बता. हेड 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 आ सकता है. ठीक है. हेड हेड टेल आ सकता है. हेड टेल हेड आ सकता है. हेड टेल टेल आ सकता है. टेल हेड हेड आ सकता है. टेल हेड टेल आ सकता है. टेल टेल हेड आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है. So there are 8 possible outcomes when we throw 3 coins together. So this also you will make on your copy. So first one, die concept, total possible outcomes when the 2 dice is thrown, that you will also make in your copy. The concept of 3 coin toss together, also this one, ये जो आपका when we throw 3 coin together, so जो possible outcomes होंगे ये वाले, this also you will make in your copy. Okay. Now coming to the next questions that may come from the playing card concept. So you all know what is a playing card. You have seen old persons playing the cards on the streets. So what are those? So that playing card is basically divided into what, 4 groups, and the total cards that are present are 52. तो टोटल कार्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं that are what, 52 कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से इन 52 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. दैट इज स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड. इनको इसमें डिवाइड करने से पहले किसमें 2 अदर पार्ट में डिवाइड करते हैं, कलर बेस में भी डिवाइड कर दिया है, ब्लैक एंड रेड. ठीक है. 52 कार्ड्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड है. पहले क्या, ब्लैक एंड रेड. फिर ये ब्लैक एंड रेड भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. ठीक है. दैट यू विल सी हेयर. सो जो 52 कार्ड्स हैं वो 13 के 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट ग्रुप है बेटा आपका स्पेड का, देन सेकेंड ग्रुप है आपका हार्ट का, देन थर्ड ग्रुप है आपका क्लब का, एंड फोर्थ ग्रुप है आपका डायमंड का. ठीक है. तो 13 के ग्रुप में जो 52 कार्ड्स हैं वो क्या हैं, डिवाइडेड हैं. ठीक है. इन द प्लेइंग 52 कार्ड्स जो हैं आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और हर एक ग्रुप में कितने बेटा आपके 13 कार्ड्स हैं. अब ये 13 कार्ड्स कैसे हैं, यू विल सी दैट. जो 13 कार्ड अरेंज है बेटा वो कुछ इस टाइप से हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर वट नंबर्स कार्ड्स हैव बीन मार्क्ड फ्रॉम 1 to 10. जो फर्स्ट वाला जो 1 है उसको हम बोलते हैं एस. वी कॉल इट वट एस. जो आपका एस होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग वट 1 को रिप्रेजेंट करता है. तो 1 इज योर वट एस. Then we have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then J is your jack. Then Q is your queen. And K is your what, king. जो आपका J है उसको हम जैक बोलते हैं. We call it what, jack. And Q को we call it what, queen. And K is your what, king. Okay. And these A's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जैक, क्वीन, किंग इज प्रेजेंट इन ऑल द 4 ग्रुप्स. दैट इज स्पेड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, देन क्लब में भी होगा, एंड इन द डायमंड ऑल्सो इट विल बी देयर. सो द क्वेश्चन में कम कि हाउ मेनी ब्लैक एस आर देयर. इफ यू सी देयर आर 2 ब्लैक ग्रुप्स, सो 2 एस विल बी देयर फ्रॉम ब्लैक. एंड इफ द क्वेश्चन कम्स रेड एस कितने होंगे बेटा, देयर विल बी 2 रेड एस. ठीक है. वन इज ऑफ हार्ट एंड वन अदर इज ऑफ वट, योर वट, हार्ट का होगा, दूसरा किसका होगा बेटा आपका डायमंड का होगा. दिस इज क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन डिवाइड 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, into 4 groups. First is your spade, then heart, then club, then diamond. I hope you all understood this. So in the next video class we would be discussing the questions based on your what, probability of the topics that we have discussed in this video class. So kindly make the diagrams. If possible I will provide you the PDF. You can print the photographs and paste on your copy, or you can directly make the photographs, pictures on your copy using colors. So with this we finish off the introduction to this possible outcomes based on dice, coin and 52 playing cards. Now we will moving to the exercise 5.3 in the next video.